अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिसीवर के लिए USB एंटीना को किस तरह रिपेयर कर सकते हैं और कैसे रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आप हमारे सामने ये देख सकते हैं वाईफाई डिवाइस है। इसको आज इसका ना एंटीना टूट गया है। सबसे पहले आज आपको इसका एंटीना भी ओपन करके दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं इस एंटीने में इतनी कोई ख़ास चीज़ लगी नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये सिग्नल उठाता है। अभी इसको ओपन करेंगे, फिर ज़बरदस्त देसी जुगाड़ वाला एंटीना बनाएंगे और वो 100% वर्किंग करेगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी इसको करते हैं ओपन, फिर इसको एंटीना बनाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए कापर की तार। ये कापर की तार है, ये आप देख सकते हैं, ये कापर की तार होगी। इसको आपको चाहिए ये कापर की तार। अगर आपके पास कोई भी शय है जिसमें का ट्रांसफार्मर हो गया या कोई भी है, वहाँ से भी ये कापर की तार आप ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कापर की तार है। इससे हमने इस कापर की तार को ना ले लिया। अभी इसको एंटीना बनाएंगे। एंटीना बनाने के बाद सोल्ड करेंगे, सारा कुछ करेंगे। वीडियो को लास्ट तक आपने लाजमी देखना है। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना। अभी इसको ओपन करते हैं, फिर आपको चेक करवाते हैं इसके अंदर क्या लगा हुआ है और किस तरह ये सिग्नल उठाएगी। वीडियो को इसके जो टांके टूट चुके हैं, अभी इसको सोल्ड करेंगे। इसका जंपर भी बनाएंगे और इसको लगाकर चेक करेंगे कि हमारी जो वाईफाई वाली डिवाइस है ये सिग्नल उठाती है या नहीं उठाती। अभी इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद आपको चेक करवाते हैं कि ये हमारी डिवाइस किस तरह काम करती है। ये आप देख सकते हैं वाईफाई डिवाइस है। इसका जंपर भी टूटा हुआ है, लेकिन इसका जंपर भी लगाएंगे और आपको चेक भी कराएंगे कि किस तरह वर्किंग करती है। ये आप चेक कर सकते हैं व्यूअर्स। ये आप देख सकते हैं हमने इसको 10 इंच तक काट लिया, ये 10 इंच तक लंबी कर लिया। अभी इसके साथ दूसरे पॉइंटों को भी काट लेंगे, इसके पॉइंटों को बराबर करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसको हमने करना है 4 इंच तक। ये आप देख सकते हैं, ये को इतना काट लेंगे। ये काटने के बाद ये एक सेटअप बन गया। फिर इसके बाद दूसरे सेटअप को भी काट लेंगे, उससे 1-2 इंच छोटा ही रखना है। ये आप देख सकते हैं, ऐसे इसको सीधा करते जाएंगे और इसको काटते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा काटेंगे, ऐसे काटते जाएंगे और हमारी ये वाईफाई वाले एंटीने की सेटअप बनती जाएगी। ये आप देख सकते हैं। फिर आखिर वाली वायर को आपने ऐसे करना है, इसको U टाइप या E टाइप रख लेना है। यहाँ पर करने के बाद ये आपको मैं चेक करवा देता हूँ, आपने इसको ऐसे कर देना है। ये आखिरी वाली वायर को आपने ऐसे कर देना है। ये आप देख सकते हैं, इसको ऐसे कर देना है। फिर इसके बाद ये आप देख सकते हैं 10 इंच तक इसको बढ़ाया है। ये आप देख सकते हैं, इसके साथ इसकी आप लंबाई चेक कर सकते हैं। ये देखें, इसको काटा है। ये सारे पीसीज है। अब इसको लगाएंगे। लगाने के बाद आपको चेक करवाते हैं सोल्ड करने के बाद। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go,
through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And